week. Can't believe it's already the last space. Just inviting those of you who have been here for 3 to 4 5 spaces, Sunday spending it with me. Just can you give us a hands up or a yes in the chat works too. एक chat में yes और 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते अगर spend कर रहे हैं. So okay, 1 2 3 4 5 6. All right. Just trying to make sense of कितने लोगों ने पहले वाले sessions attend करे हैं. Reason being that आज का session is about mental health toolkit. Okay, 6. We have 6 people right now जिन्होंने पहले वाले sessions भी attend करे हैं. All right. Generally हमने series में sessions में पुराने काफी सारे tools सीखे हैं over time. हमने different tools use करे हैं over time. आज का सेशन इज प्राइमरीली टू बी एबल टू यूज दोज टूल्स. थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी इन जनरल कि हमने पहले क्या डिस्कस किया है सो फार. हमने स्ट्रेस और एंजाइटी को समझा. स्ट्रेस और एंजाइटी को समझा एज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट फील्स लाइक अ थ्रेट. जो भी चीज खतरा लगती है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी बेसिकली उस चीज का फायर अलार्म है, वो बजने लगता है. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि किस किस बात पे बज रहा होता है एंड इफ एट ऑल इट इज नीडेड. हमने उसको इवेलुएट किया इन सेशंस के ड्यूरेशन में. Another thing that we really learned was overthinking as a symptom of anxiety. कि किस चीजों के बारे में हम वरी करते हैं, क्या वरी का मतलब क्या होता है, हमारे थॉट्स कब रेस कर जाते हैं, किस पॉइंट पे जाके हम थॉट्स को इवेलुएट कर सकते हैं. We did all of that. Another thing that we did throughout this time was also acknowledge कि हमारी body कैसे respond करती है. For example, I like to give this example that when I am stressed, मेरा jaw में दर्द होता है because I clenched my jaw recently and ये वाली चीज मुझे मालूम ही नहीं थी, तो I went in for like a root canal, other things, but तभी भी pain रह रहा था and I realized that it was just stress pains because every time I was stressed, I was just clenching my jaw and वो tension was being held up in my body. हमने डिस्कस किया था, लोग बोल रहे थे कि सर में दर्द होता है. लोगों ने शेयर किया था, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया था, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को रेस्टलेसनेस होती है लेग्स में, अदरवाइज मूव कर रहे होते हैं बॉडी, बैठा नहीं जाता एक जगह पे या फिर उठा नहीं जाता मॉर्निंग में. फिर डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स एज वेल. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, वन थिंग दैट इज कॉमन इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, जो भी लाइफ में हो रहा है उसमें वन थिंग दैट इज वेरी वेरी कॉमन, चाहे अलग अलग चीजें हो रही हो, इज यू. यू आर द कॉमन थ्रेड इन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. और उसके बाद हमने बिल्ड किया था कि कैसे हम वो सेल्फ को एम्पावर करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं एंड व्हाट डज दैट सेल्फ एम्पावरमेंट रियली लुक लाइक. This was like a brief overview. If somebody has anything that I've missed out so far या कुछ याद है और कुछ शेयर करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड. बिकॉज आज का सेशन 45 मिनट्स हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, एक्सरसाइजेस सीख रहे होंगे. तो अगर आपके आसपास पेन और पेपर है और आप सिर्फ नाम लिख सकते हो उन एक्सरसाइजेस के या स्टेप्स लिख सकते हो उन एक्सरसाइजेस के, आई वुड अप्रिशिएट दैट. Otherwise, I understand that Gandhi Study Circle also uploads these videos. Make sure कि वीडियो को वापस जाके विजिट करो जस्ट इन केस यू फॉरगेट कि क्या सिखाया था, किस तरीके से किया था. Just checking in. Anybody who would like to say something, ask something, not ask something right now. आज मैं questions इतने नहीं ले रही हूँ directly because आज हम लोग focused हैं on tools, right? So at max मुझसे अगर क्वेश्चंस पूछने हो तो आज के सेशन में क्वेश्चंस कैन बी सराउंडेड विद कि इसके लिए लेट्स से मेरे को पेट में दर्द होता है तो कौन सी वाली एक्सरसाइज करें, या फिर मेरी चिंता नहीं रुकती है, मेरे को नींद नहीं आ रही होती है बिकॉज ऑफ माय थॉट्स, तो कौन सी वाली एक्सरसाइज करें. सो एक्सरसाइज ओरिएंटेड क्वेश्चंस. आज हम इनसाइट ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज द टॉपिक इज वेरी वेरी रेलिवेंट. तो जितने भी क्वेश्चंस हो प्लीज सराउंड देम टू व्हाट टू डू, राइट? इट्स अ टू डू स्पेस राइट नाउ. लास्ट टाइम हमने ऑल्सो वी डिस्कस्ड वाज टू बी स्पेस. बाद में जो लोग रुके थे क्वेश्चंस के लिए,
We had a 2 beat space that we discussed. Also, आज I will be here till 11:45 maximum because I have another session. So that's how we'll contain the session together. 11:30 that we'll do the tools, and then 15 minutes for questions. After that we'll close. Um, okay, anything so far? ठीक है. एक चीज जो हमने सबसे पहले सेशन में स्टार्टिंग ऑफ द स्पेस सीखी थी, विच वाज एब्डोमिनल ब्रेथ, कि सांस लेनी कैसे है, राइट? अ लॉट ऑफ द वर्क दैट वी डू टुडे, आज हम जो भी चीज करेंगे, जिस भी तरीके से करेंगे, अ लॉट ऑफ दैट विल बी फोकस्ड एंड सेंटर्ड अराउंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं बॉडी के साथ. बॉडी के साथ क्यों जरूरी है काम करना? बिकॉज आपकी बॉडी पहले रिस्पॉन्ड करती है स्ट्रेस को बिफोर योर माइंड डज एज वेल. आपके माइंड को समझ आने से पहले भी कि हम किस बात पे चिंता हुई हमारे को या किस बात पे हमें प्रॉब्लम हुई, यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है उसको. तो बॉडी के साथ काम करने के लिए एक बहुत ही, हम हार्ट बीट तेज हो रही है, हम हार्ट बीट को नहीं रोक सकते. पसीने आ रहे हैं, आप पसीनों को नहीं रोक सकते, राइट? यू कांट चेंज दीज थिंग्स बिकॉज इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म्स है. इजियर शब्दों में बोलूं तो ये अपने आप होने वाली चीजें हैं बॉडी की. पर आप क्या चीज को कंट्रोल कर सकते हो और लेट्स से रेगुलेट कर सकते हो, वो है आपकी ब्रेथ. ब्रेथ रेगुलेट करने से आप बाकी सारी चीजें रेगुलेट कर सकते हो, बीट योर हार्ट बीट, बीट योर स्वेट्स, बीट योर रेस्टलेसनेस, बीट एनी अदर सिम्टम्स जो बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, इंक्लूडिंग पेन. सो लॉट ऑफ पीपल, आई ट्रेन एंड वर्क विद कैंसर पेशेंट्स एज वेल, तो उनके साथ भी कि कैसे आप अपने पेन सिग्नल्स को कंट्रोल करो या फिर उनके साथ काम करो थ्रू योर ब्रेथ. तो हमारी सांस, हमारी श्वास एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको अगर हम ठीक से यूज कर ले, यूटिलाइज कर पाए और उसको हम यूज में लाना शुरू कर दे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, तो हम अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रेगुलेट करना सीख सकते हैं. गुड सो फार? गिव मी अ यस और अ थम्स अप इन द कमेंट्स और अदरवाइज. ओके, थैंक्स सूरज. स्पीड ठीक जा रही है? जस्ट चेकिंग इन. ओके, थैंक यू शिवम, थैंक यू मोहित. ओके, ऑलराइट. थैंक यू अनिकेत, ईशानी, दीपांशु, सात्विक. ओके, थैंक यू नवनीत. नेक्स्ट इज, थैंक यू डॉक्टर मनीषा. आई नो टीचर्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग में, तो प्लीज अपने नेम के आगे मिस, मिसेस, मिस्टर, डॉक्टर प्लीज लगा लीजिएगा, सो आई नो दैट आई एड्रेस यू अप्रोप्रिएटली, वुडंट वांट टू नॉट एड्रेस करेक्टली. थैंक यू शिवानी. ऑलराइट, सिंपल चीज से स्टार्ट करेंगे. आई विल ट्राई दैट यू सी मी एज मच एज यू कैन, बट बहुत ही सिंपलिस्टिक चीज है जिसको आज करेंगे. हाथ ऑन योर एब्डोमेन, पेट पे हाथ रखेंगे एंड मेरे साथ सांस लेंगे. ठीक है? कुछ सांसें लेंगे. जनरली जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम बहुत छोटी सांसें ले रहे होते हैं. जल्दी जल्दी सांस लो, एंड इसीलिए हम बोलते हैं, आप देखोगे एंजाइटी का एक सिम्टम है हाइपर वेंटिलेशन, कि सांसें छोटी 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 टूटी टूटी सांसें ले रहे होते हैं. The moment that you can retrain that breath to a deep relaxed breathing, आपकी बॉडी anyway सेफ्टी पे आ गई, anyway उस मैकेनिज्म पे आ गई जहां पे आप शांत हो. राइट? सो सिंपली आज हैंड ऑन योर एब्डोमेन एंड वी विल ब्रीथ. ओके? सांस कैसे लेनी है? सांस लेनी है नाक से, आवाज नहीं आनी चाहिए सांस लेते हुए. अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम डीप ब्रेथ्स लेते हैं, हमें लगता है कि अगर सांस में से आवाज आएगी तो हम डीप ब्रेथ ले रहे हैं, बट कोई पर्पस नहीं है स्ट्रेस के रिलेशन में, बिकॉज आप बॉडी को स्ट्रेस करके माइंड को स्ट्रेस फ्री नहीं कर सकते हो. सो धीरे धीरे एज यू कीप प्रैक्टिसिंग इट, सांस गहरी होती जाएगी. पर जब तक नहीं हो रही है तब तक जितनी गहरी सांस है उतना अच्छा. राइट? सांस लेने का तरीका क्या है? दैट यू टेक अ ब्रेथ इन थ्रू योर नोज, लेट इट गो डीपर.
डीपर इन द सेंस दैट लेट इट गो टिल द पॉइंट कि आपका पेट गुब्बारे की तरह बाहर फूले, और जब आपको लगे कि अब ये मैक्सिमम फूल गया है, जितना फूल सकता है, जितना ज्यादा उसकी कैपेसिटी है, देन यू अलाउ योरसेल्फ टू ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करते हुए डिफ्लेट होता है जैसे गुब्बारा, उसी तरीके से यू विल अलाउ योर स्टमक टू डिफ्लेट, लेट द ब्रेथ आउट। कई लोगों को कंफर्टेबल लगता है ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज। बिगिनिंग में कई लोगों को ये कंफर्टेबल लगता है दैट दे ब्रीद इन थ्रू देयर नोज एंड आउट थ्रू देयर माउथ। सो ओपनिंग इट अप फॉर यू, जिस भी तरीके से आपको ठीक लगे। वी विल टेक एटलीस्ट 10 ब्रेथ्स टुगेदर अभी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हैंड ऑन द एब्डोमेन, breathe in, wait for a moment and out, breathe in, no आवाज, and out। नोटिस करना है कि चेस्ट आगे पीछे नहीं हो, पेट बाहर की तरफ निकले। कई बार हम लोग सिर्फ चेस्ट या फिर यहाँ कॉलर बोन से, मतलब जो लोग ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनका एक गुड वे टू टेस्ट इज ऑल्सो दैट दे आर ब्रीदिंग थ्रू देयर क्लैप, ये वाला एरिया कॉलर बोन तक ही ब्रेथ जाती है, नीचे तक भी नहीं जाती है। सो द मैक्सिमम ब्रेथ दैट दे टेक इज ये ऊपर नीचे हो रहे होता है। मेरा नहीं होगा अभी, आई डोंट नो हाउ टू ब्रीथ लाइक दैट, बट यहाँ से ब्रीथ कर रहे होता है। कुछ लोग जो जनरली स्ट्रेस्ड हैं बट इन जनरल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, वो चेस्ट से ले रहे होते हैं कि सांस आती है, यहाँ पे चेस्ट बाहर जाता है, अंदर जाता है, दैट्स इट। राइट अमाउंट ऑफ ब्रीदिंग इज जब आपके पेट तक सांस जा रही हो। जाने देंगे आज। वंस अगेन, हैंड ऑन योर स्टमक, प्लेस इट देयर, गुब्बारे की तरह पेट बाहर आएगा। ब्रीद इन, नो साउंड फॉर द ब्रेथ, विल वेट अ सेकेंड, एंड आउट, one more time, breathe in and out, breathe in and out. Breath number 6, breathe in and out, breathe in and out, in and out, breathe in and out. A thumbs up if this worked. Any reflections, any problems with this? Let me know. Okay. Okay. Feeling very calm, right? Now that's the first step, right? Next step is a lot of times हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस बहुत होल्ड करते हैं। I'll share the reason as well. हमारा ये जो एरिया होता है, this is the longest vein of our nerve of our nervous system. It's called vagus nerve. हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ होल्ड करते हैं, इसीलिए आप देखोगे something that is very very common, इसीलिए jaw clenching and shoulders. Okay, I'm glad that it's working. Thank you for the comments. Keep leaving the feedback in the comments so I know. Another thing that is very very common is कि हम यहाँ पे स्ट्रेस स्टोर करते हैं, इसीलिए लोगों का आप देखोगे। एंड इवन योगा में जब शवासन बोलते हैं, एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी था, शवासन कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज शोल्डर्स काम करने नहीं आते, हमें आता ही नहीं इनको ऐसे ड्रॉप करना। वी जस्ट लाइक ऑलवेज ऐसे होता है ना, जैसे सैनिक तैनात रहते हैं, वैसे हमारे शोल्डर्स जनरली बहुत स्ट्रेस रहते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं है बॉडी में। सो अभी के लिए वी विल स्टार्ट विद श्रगिंग द शोल्डर्स, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, right? So let's start. Very simple. 10 shrugs of the shoulders. 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Let yourself move a little. Shake, shrug, move a little. See your shoulders. See the mobility of your shoulders. See if you could just let them relax. If not, you can come back to this exercise as many times as you want. But a lot of times, just letting stress go off your shoulders with a sudden jerk moment, basically it catches your nervous system by surprise and it allows for a release जो otherwise नहीं हो रहा होता. पकड़ के रखा है, एकदम से कोई चिल्लाए, कुछ पकड़ रखा हो, एकदम से जोर की आवाज आए या धक्का आ जाए, गिर जाता है हाथ से वो चीज, चाहे कितने ध्यान से पकड़ी हो. Similar for stress. बहुत ही आराम से ध्यान से पकड़ के बहुत टाइम से चल रहे हैं, just giving it a very knee jerk moment allows release, right? So good way to release stress is this. नहीं आ रहा कुछ समझ में, this, right? Next thing, हुआ ये easy? Nothing so far that I taught was मुश्किल? ठीक है. Now we will start forming breath के patterns, right? Thumbs up. All right. We will start forming breath के patterns, and when I say breath ke patterns, it basically generally means that we will make our breath more rhythmic. We will make our breath more calm. And a way to do that is basically through, giving it rhythm. हमारी body rhythms को बहुत अच्छे से respond करती है. जितनी बार सांस अंदर जाती है, उतनी बार बाहर भी आती है. That's a rhythm, right? That सांस अंदर गई, बाहर आई. Heartbeat is to a rhythm. Other things that we continuously do in our body and engage with as well come rhythmic as well. For example, digestion patterns. For example, neural impulse, that it goes, it comes back, it goes, it comes back, EEG, etc. They mostly just tap on the rhythm of the body. The more rhythmic that we can make our breath, उतना ज़्यादा हम शांत हो पाते हैं, हुआ जाता है, right? तो समटाइम्स अगर रिदम फॉर्म नहीं भी करनी आ रही हो और बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एक बहुत ही सिंपल छोटी टेक्निक, पिक अप योर रिस्ट, place your hand on your pulse, sit with your pulse just for a moment and start breathing and trying to match your breath through that pulse, which means breathe in and out. Breathing का pattern same रहेगा, in through your stomach, out through your mouth, from your stomach. Stomach inflates when you breathe. सांस लेते हुए पेट बाहर की तरफ फूल रहा है, बाहर लेते हुए stomach deflates. Okay, pulse rate अगर fast हो, good question, thank you राशि. तो हम breathing को rhythmic बनाएंगे, which means that whatever feels a good rhythm for your breath right now, जैसे हमने पहले deep breathe किया था, अगर वो एक space ठीक लग रहा था, which means breathe in, stomach जितना फूल रहा है उतना, and out, in and out. Do it for 5 to 6 breaths. आप notice अपने आप ही कर लोगे आपके pulse rate में change. And this is especially true जिसको भी अगर panic attacks या फिर anxiety attacks का problem होता है, कि एकदम से रोना आता है, हाइपर वेंटिलेशन होती है, सांस रुक जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, टेंस हो जाती है, उन लोगों के स्पेशली दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज. जस्ट सिट विद योर पल्स, नोटिस योर पल्स. पैनिक के अटैक के टाइम पे ये बार बार खुद को बोलना कि मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, दैट इज नॉट हेल्पफुल. व्हाट इज हेल्पफुल इज टू बी एबल टू सिट विद योर ब्रेथ. खुद को ये बोलना मेरी सांस नहीं आ रही इज नॉट हेल्पफुल. टू रेगुलेट योर ब्रेथ is helpful. So just sit with yourself, recognize कि okay मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, etc etc, जो भी आपके symptoms हो, and then just sit with yourself with a certain calmness. Okay, it will work out. Just breathe in and out, in and out. For Rashi's question, अगर already pulse बहुत तेज है, तो जितनी भी डीप ब्रेथ ली जा रही है, उतनी डीप ब्रेथ लेंगे, and we'll allow our bodies to breathe out
as and when it feels safe, as and when what feels comfortable. Breathe in and out, in and out. Did it work? Tashi, did it work? Was it helpful? All right. Thank you, Dia. Wonderful. नेक्स्ट चीज एक और रिदम ऐड करेंगे which basically means ये हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था तो इट्स अ रिविजन for those but आज के लिए it's a new thing that we'll be doing, right? Small difference in pulse rate. If you're able to just sit with it and you do the exercises as we are doing, कोई भी एक्सरसाइज को पकड़ के 10 मिनट अगर आप कर लेते हो तो that's one way to like really sit and calm with yourself, right? A lot of times I hear from students, from people कि meditation नहीं करी जाती, even though meditation करनी चाहिए, but notice the speed of your thoughts right now. जब से शुरू किया तो अभी notice the speed of your thoughts कि thoughts नहीं रुकते meditation करने के time पे. Just little exercises body की, क्योंकि आप मेंटली मेडिटेट करना चाह रहे हो बट स्ट्रेस बॉडी का रिस्पॉन्स है, एंजाइटी बॉडी का रिस्पॉन्स है. आप जब बॉडी को अटेंशन और नीड उसकी मीट कर दोगे आप अपनी मेंटल नीड्स, स्पिरिचुअल नीड्स बेटर मीट कर पाते हो, विच इज फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड, राइट? नेक्स्ट चीज करेंगे वेरी सिंपल अगेन, विच इज बेसिकली वी विल ब्रीथ इन एंड कीप होल्डिंग. यहाँ पे पॉज का इंपॉर्टेंस बताऊंगी. जब हम स्ट्रेस होते हैं या एंक्शियस होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी को सिग्नल जा रहा होता है खतरा खतरा खतरा. द मोमेंट दैट यू कैन क्रिएट अ पॉज, इस खतरे की सिग्नलिंग में आपकी बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देती है, विच मीन्स दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर खतरा खतरा कर रहा होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस स्पेस में जो पॉज के स्पेस में है वो वापस एक्टिव हो पाता है, जो कामिंग एंड सूदिंग मैकेनिज्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपना काम करना शुरू कर पाता है, बिकॉज हमें मोमेंट ऑफ काम चाहिए होता है, हमें मोमेंट ऑफ स्टॉप चाहिए होता है फ्रॉम द क्राइसिस, जिससे वो वापस अपनी रेगुलेशन शुरू करे. So we will start regulating our nervous system very simply, very calmly with a very small exercise. सांस लेंगे, सांस अगेन लेने का वही तरीका that सांस लेंगे तो पेट बाहर, and we will pause for 1 second के लिए. We will breathe out. We will allow ourselves to pause for 1 second again. Breathe in, pause, count till 1, breathe out, pause, count till 1. फिर से करते हैं. Breathe in, pause, count till 1, breathe out, pause, count till 1. अब ये काउंट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है? यहाँ तक हो पाया? गिव मी अ यस. Yes or a thumbs up, anything works. Okay, ठीक है. All right. Just also checking in speed ठीक है. अगर speed लगे कि that I should go slower, just write me in the chat that please go slower. ठीक है? Okay. So we will go to. Okay. I'm checking the chats. If you have said yes, I'm glad. ठीक है. Now we will increase the gaps, which basically means अब हम rhythm add करेंगे. Rhythm किस तरीके से add करेंगे that I'm teaching you. We will breathe in, pause for 1 and 2, breathe out, pause for 1 and 2, breathe in, 1, 2, 3, the pause, breathe out, 1, 2, 3,
pause. Breathe in. 1, 2, 3, 4. Breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allow yourself to breathe in and out more normally, more rhythmically. Whenever you feel ready, you get back to the here and now. Any questions? Anything that did not work so far? 3 techniques कर चुके हैं. One is basically breathing in through the abdomen. That's not so much of a technique as inviting you कि रोज ऐसे सांस लिया करो. Because जब जब हमारी बॉडी को सांस नहीं में आ रही है ठीक से, हमारी बॉडी anyway खतरे का सिग्नल देगी. Because सांस लेना बहुत important है. ऑक्सीजन के बिना anyway we are stressed. तो जितना ज्यादा हम खुद को ऑक्सीजनेट कर पाएंगे उतना उतना ज्यादा अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे. सेकंड चीज जो हमने सीखी थी, ओके, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज फीलिंग अ लिटिल टायरिंग. अगेन इनवाइटिंग यू, जितना हो पाए उतना धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजियर होता जाएगा, विच इज ट्रू. अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एंड दिस इज ट्रू फॉर पीपल जिनका मैं बोल रही थी वो कॉलर बोन से सांस ले रहे होते हैं, तो अगर आपकी सांस यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जाती है और फिर स्प्रेड होती है, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू ब्रीथ थ्रू द चेस्ट. फिर उसके बाद एब्डोमेन आता है, तो इट कैन फील लाइक अ लिटिल मोर ड्रेनिंग. तो पर सांस ले रहे हैं तो ट्राई करेंगे जितना ली जा रही है उतना ज्यादा. खुद को फोर्स, प्रेशर या अनसेफ नहीं फील करवाना है कि अभी ही सब कुछ करना है. The idea is कि हम सीख पाए. What if your anxiety overpowers your ability to focus on breathing? Janisha, we will cover these questions. Anxiety specific spaces, especially panic attack spaces. वहां पे breathing नहीं हो रही, come to your breath. Come to your pulse. Sit with your pulse and let your breath regulate to the pulse. ब्रीदिंग पे नहीं फोकस हो पा रहा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कई बार एंजाइटी में हम हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं, तो जितना ज्यादा सांस के साथ बैठे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है सांस लेना. आई अंडरस्टैंड दैट, राइट. इन विच केस आप हमेशा अपने पल्स के साथ बैठ सकते हो और पल्स के साथ साथ सांस ले सकते हो. ठीक है, अगर 6 के आसपास काउंट करना मुश्किल हो रहा है, इट्स ओके. स्टार्टिंग में यू कैन स्टार्ट विद 1 to 4. 4 से जब जब कंफर्टेबल लगे टू गो टू 5 and then 6. पॉज करने में अगर मुश्किल हो रही थी. ऑल्सो फॉर योर क्वेश्चन जनीशा, आने वाली हम जो अभी एक्सरसाइजेस करेंगे, यू कैन गो बैक टू दीज एक्सरसाइजेस. अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही है, डोंट वरी, देयर आर स्टिल टूल्स, देयर आर स्टिल वेज टू हेल्प यू ड्यूरिंग अ पैनिक और एंजाइटी मोमेंट. आप वो सब यूज करके फिर वापस ब्रेथ वर्क पे आ सकते हैं जब बॉडी ऑलरेडी थोड़ा सा काम महसूस कर रही है. When we pause our breathing after inhale or after exhale or at the both stages, we pause at both the stages because हम दोनों stages पे ही वो signal break करना चाह रहे हैं, which is saying खतरा खतरा खतरा. ओम शांति ओम देखिए, वो जो शाहरुख खान कैमरे के आगे आगे भागो भागो कर रहा होता है. It's something like that you break that pattern. Okay. Any other questions? ठीक है. Feel free to drop the questions in the chat box. I'll keep coming back to them. Next चीज, हम
हाथ है सबके पास? Checking in. We'll take our hands. And this is also for you, Janisha. Now these things are कि breathing नहीं हो रही है, that's fine. We will cause ourselves to breathe in a certain way. हम अपनी breathing को एक certain तरीके से train करेंगे और उसके लिए हम somatic चीजें use कर रहे हैं कि ये बहुत tangible चीज है हमारे पास. हम इस सब को use कर रहे हैं to be able to breathe in a certain rhythm. जो रिदम हम खुद नहीं ला पा रहे 1 2 3 पॉज करके भी या इसके साथ बैठ के भी पल्स के साथ अब हम रिदमिक करेंगे ब्रेथ राइट. विल टेक आवर हैंड्स. आई नो सबके कैमरास ऑफ हैं बट इनवाइटिंग यू कि अपना हाथ अपने सामने ऐसे रखेंगे. सिंपल एक्सरसाइज है. हर बार टॉप पे जाते हुए हम सांस लेंगे. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हम सांस बाहर छोड़ेंगे. एक्सरसाइजेस लाइक दिस. वी गो फ्रॉम हियर. ट्रेस करना है हाथ. outline. Breathe in and out. 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 5 times करेंगे इसको so that you catch the rhythm. Simply outline draw करनी है हैंड के यहाँ से यहाँ. अपने हाथ को सामने रख के या फिर ऐसे रख के किसी भी तरीके से जैसे भी कंफर्टेबल लगे. अभी सामने रखने का एग्जांपल दूंगी कि देख पाओ आप लोग कि कर क्या रहे हो. आउटलाइन ड्रॉ करनी है हाथ की. ऊपर जाते हुए आप सांस अंदर ले रहे हो. वी कैन स्लो द स्पीड ऑफ ब्रेथ. यस, मेरी स्पीड अगर फास्ट लग रही हो तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो. दैट इज एब्सोल्युटली ओके राइट. Breathe in and out. In and out. मैं भी थोड़ी स्पीड स्लो रखूंगी. In and out. In and out. In and out. Go again. Breathe in and out. In and out. In and out. And out. In and out. We'll come again. Breathe in and out. 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 That was round 4. We'll do the 5th one now. Breathe in and out. 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 That's it. Did it work? Made sense? Give me a thumbs up if it made sense. It worked for you. All right, thank you. Navneet, do you have a question? All right. All right. अगर कोई question हो, feel free to drop them in the chat. I'll be happy to take them up. Simple exercises, right? Things that you can do like every day, all the time. Nobody has to know kind of exercises. Another exercise which is very, very common
फोन सबके पास होते हैं. आई नो सम ऑफ यू माइट बी लॉग्ड इन थ्रू योर फोन राइट नाउ. नॉट टू वरी, हम फोन तभी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. द आइडिया इज दैट सिंपली फोन की आउटलाइंस को फॉलो करना है. राइट. We'll keep following the outlines and breathing with the outline of the phone. आपके आसपास फोन ना हो तो शायद कोई नोटबुक होगी. नोटबुक भी ना हो तो शायद कोई छोटा पैड या कुछ होगा. कुछ भी ना हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन योर हैंड. ठीक है. सूरज मैं अभी करती हूँ वो पल्स रेट वाले पे. आई विल कम बैक टू दैट. Backbone should be straight again, something, because this is not a yoga class particularly. My yoga teacher would tell me to keep my back straight definitely, but genuinely at this point अगर stress anxiety और breath नहीं आ रही है तो पहले सांस को वापस ले आए. Then we'll focus on the postures. Nothing that causes you more stress is worthy in the moment of stress. किसी भी चीज से अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, which basically means कि ज्यादा देर पॉज करने से, जल्दी सांस लेने से, कम सांस लेने से, कुछ भी चीज से अगर प्रॉब्लमैटिक हो रही है चीज, तो we will not do that, even if it's like forcing ourselves to sit a certain way or be seating a certain way, right? A lot of these exercises I have also done while lying down on my bed, so I know that they work as beautifully as that. So it's not necessary at this moment, but a good posture always helps. So feel free to sit as straight as you can. उसका भी reason होता है जितनी ज्यादा हमारी back और जो योगा में बोलते हैं मेरुदंड, वो जितना सीधा रहता है उतनी ज्यादा deep हम सांस ले पाते हैं. So posture has importance, but at the same time अगर ease और comfort के साथ posture से किया जा रहा है करो. नहीं किया जा रहा तो bring yourself आदत डालने के लिए do the exercises and धीरे धीरे come back to the posture as well. Back to the phones. अगर zoom logged in है तभी भी it's okay. इसको बोलते हैं 4 square breathing technique. इससे पहले जो हमने यूज करी थी, does somebody want to ask something? ठीक है. If you have something to ask, etc., feel free to drop them in the chat. I'll be happy to take up the questions. इससे पहले ये जो हमने ब्रीदिंग टेक्निक करी थी इसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीदिंग, because it's almost like a mountain that you're breathing in. A lot of times deep breaths may not work for people because कई बार वो anxiety inducing हो जाती है, सांस नहीं आ रही, rather than कि छोटी सांस से हाइपर वेंटिलेशन अगर एक सिम्टम एंजाइटी का, तो ऑल्सो सांस ना आना या फिर बहुत गहरी सांसें हो जाना जैसे रुक गई, दिल बैठा जा रहा है वाली जो फीलिंग होती है, वो भी कई लोगों का एंजाइटी से होता है. तो all of these might not work for you, but all of these work. आपके लिए क्या काम करती है? Take what works for you, leave the rest, right? So mountain breathing technique एक rapid breathing technique है जो ना हाइपर वेंटिलेशन कॉज कर रही है ना वो एकदम डीप ब्रेथ कॉज कर रही है. यू कैन जस्ट यूज इट एट द स्पीड, एट द पेस, एट द टाइम दैट यू वांट. सिंपली सांस रेगुलेट करने में हेल्प कर रही है. सेम फॉर 4 स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक. अगर फोन भी आसपास ना हो, कैन ऑलवेज ड्रॉ अ स्क्वायर ऑन योर हैंड. मैंने ट्रेनिंग करते करते बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे एंड आई रियली रियली हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ. So I used it within my shoe कि मैं शू के अंदर ट्रेस कर रही थी a square and I was just like doing the training so that I don't get overwhelmed, I don't get stressed because generally noise tends to get to me. So once again similarly square आप कहीं भी बना सकते हो. Ideally rectangle, square, anything works. Simply करना क्या है, you start breathing in and out, in and out, in and out, in and out. Once again reminding you speed इसकी वही हो सकती है जो आपको चाहिए. Not necessarily मेरी speed ही match करनी है. This was a little faster. I will go slower now. Right? Breathe in
and out, in and out, in and out, breathe in and out, in, out, in, out. क्योंकि आप लोग काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है प्लेसमेंट इंटरव्यूज आ रहे हो या इन जनरल लाइफ में काफी सारे इंटरव्यूज देने पड़े. um इंटरव्यूअर डज नॉट हैव टू नो कि आप ब्रीदिंग टेक्निक के साथ सांस ले रहे हैं. बट जो मोमेंट्स होता है जहाँ पे आपको लग रहा है कि या तो वर्ड्स ठीक से नहीं निकल रहे, मतलब स्लरी हो रही है स्पीच, या फिर दिमाग नहीं चल रहा, या फिर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर पाए, एंड दीज आर वेरी सिंपल, लाइक आपका हाथ, अभी तो वर्चुअल इंटरव्यू है, हाथ नीचे रखकर अगर आप माउंटेन ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, गो फॉर इट. अगर आप सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, इंटरव्यूअर के हाथ पास में, और आप पल्स पे हाथ रख के, Rashi, I'll give you an opportunity by the end of the session. Definitely you can ask that question. I'll give you the opportunity. Please note it down somewhere so that you also don't forget, and I'll also come back to you. इंटरव्यू में आप अपना हाथ आपकी पल्स पे रख सकते हो, पल्स के साथ सांस ले सकते हो. नोबडी हैज टू नो दैट यू आर एंगेजिंग इन अ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, बट आप कर सकते हो. Similar for, like I said, ki training mein nobody had to know that I was using the technique, but I used the breathwork technique of basically drawing a square. मेरे जूते के अंदर ही, शू के अंदर, I was drawing the square and breathing to the rhythm of that square and regulating my stress. The idea is regulation आप किसी भी तरीके से करें, किसी भी टेक्निक से करें. A lot of these techniques सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप एंगेज कर रहे हो, बट आप एंगेज करके उनके साथ अपना रेगुलेशन में एंगेज कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ. वर्क्स. So far so good. I have two more techniques to teach them, and then I'll be happy to take questions. The next technique is very very simple. Why it works? Because अगर आप देखोगे एक बेबी जो मदर के वूम्ब में होता है, जब बन रहा होता है बेबी, the child is actually developing the nervous system like this. This is how your nervous system develops. बच्चे का हाथ naturally womb के अंदर ऐसे होता है, right? ये जो स्पेस है, एनसी मेरे को भी सांस आ जाती है. दिस इज माय फेवरेट टेक्निक टू वर्क विद मी, कि मेरी सांस रेगुलेट हो जाती है द मोमेंट आई डू इट. So just this activity of coming like this is our space of protection. कोई सामने कुछ भी कर रहा हो, इजिप्शियन ममीज या फिर वो जो आर्मर्स लगे हुए दिखाई देते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं. Why? Because this is a very protective space. So अपने आप को ये प्रोटेक्टिव स्पेस दे पाना, इट्स एज सिंपल एज दैट. इट्स एन ऑल्टरनेटिव शोल्डर्स पे हग a lot of times, and this is where I will answer your question. किसने पूछा था? जनीशा. This is the answer to your question कि अगर breath work काम ना करे तो क्या कर सकते हैं. We can use these and go to breath work, right? Idea is very simple. One hand on the alternative shoulder, the other on the alternative shoulder. Let the shoulders come together. कई बार जिन लोगों को रेस्टलेसनेस होती है, वो कांप रहे होते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के टाइम पे, simple thing, you can start with this, applying a little bit of pressure on your bigger limbs, right, which also includes your thighs and legs. कि उनको अपने पास करके बिगर लिम्स पे अगर आप प्रेशर दे सकते हो, दिस इज वेरी स्लाइट एंड लाइट प्रेशर, बट इफ यू कैन जस्ट गिव योरसेल्फ दिस, आपकी बॉडी रेगुलेट करना शुरू कर देती है. दिस इज अ कामिंग मैकेनिज्म, राइट? वो अपने आप ही रेगुलेट करेगी. ऑल यू हैव टू डू इज लाइक गिव अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर टू द बिगर लिम्स. एंड ये सारी की सारी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स हैं कि खुद आप क्या कर सकते हो अपने स्पेस में टू हेल्प यू व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे. I used to have these days, and this was a long time ago, but I used to have these days. I have them sometimes today as well. जब रोना आता था, रोना नहीं रुक रहा होता था. This is a good way. Take yourself to the washroom, do it, complete, and come back, right?
and we all have our days. So once again, acknowledging the humanity that we all survive with. A lot of these techniques that I'm teaching right now, they work beautifully well for me as well. Simply ये करने के बाद just notice your breath, just notice your thoughts, just notice your mind, right? उसके बाद next step is कि यहाँ पे we will tap. एक दो 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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. You can change the rhythm as fast or as slow as you want. The idea is that आप bilaterally tap कर रहे हो. This is called bilateral tapping stimulation. आप body को stimulate कर रहे हो, but in a posture and in a way that makes sense and provide safety for your body. We'll do it for a couple of minutes. Try it for a couple of minutes. Let me know how it works. Notice your breath. जिसके लिए सांस लेना पेट से मुश्किल हो रहा था, just try अब सांस लेना with this. इसको कहते हैं बटरफ्लाई टैपिंग टेक्निक या फिर बटरफ्लाई हग. We'll give it 10 more seconds. And then inviting you to let go. It's work for you. All right. Did it work? Let me know in the chat, please. A yes or no would be good. Was it easy to do? Okay. Yes. Good. It's good. All right. Okay. Work the same as a tight hug. Hugs work because it's again stimulation on the bigger parts of the body. This is like a self hug. ठीक है. कोई भी ऐसी टेक्निक जो मुश्किल लगी हो, आई नो मैं पल्स वाला चीज एक बार फिर से रेगुलेट कर देती हूँ, रिआइटरेट कर देती हूँ, सॉरी. पल्स के साथ रिदम बनाना कैन बी दैट आप हर 3 पल्स पे सांस ले रहे हो, फिर 3 पल्स पे सांस छोड़ रहे हो. इट डजंट हैव टू बी टू द पल्स दैट यू हैव टू ब्रीथ. रिदम बनाना कुछ भी हो सकता है. आप 3 को 5 भी कर सकते हो. जब मैं गहरी सांस लूंगी उतनी देर में 5 पल्सेस निकलेंगे, फिर मैं गहरी सांस बाहर छोड़ूंगी तो 5 पल्सेस. then you will see that वो 5 की 3 3 to 2 2 to 1 आप करके क्लोज कर सकते हो. रिदम देना है किसी भी चीज को, राइट? Simply just being able to sit with your pulse is also okay. नहीं भी रिदम दो तो भी बस गहरी सांस लेते जाओ while holding your pulse. That is okay too, because आपकी body awareness बहुत बढ़ जाती है the moment that you're giving your body a good space of recognition. उस body awareness में you can really calm yourself down. क्योंकि हमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी हैं, इनवाइटिंग यू ऑल टू चेक इन सबका मन कैसा है एंड थॉट्स कैसे हैं. बिकॉज अ बिगर चैलेंज जो हम सब ने शेयर किया था कि थॉट्स नहीं रुकते हैं और मन ऊपर नीचे हो जाता है. प्लीज लेट मी नो इन द चैट. हाउ इज योर माइंड? हाउ आर यू फीलिंग? कितने थॉट्स हैं?
Meanwhile, Rashi, you had a question. Feel free to unmute now and let me know. I'm happy to take the questions. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम ब्रदर ऑफ राशि। मेरे क्वेश्चन थे मैम, जब हम समटाइम्स एक किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर किसी बिग ऑडिटोरियम में फॉर स्पीच के लिए, तो हमारी आवाज डाउन हो जाती है, हमसे मतलब बोला नहीं जाता, हमारी वॉइस चेंज हो जाती है और पल्स रेट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उस टाइम पे हम कैसे कर सकते हैं मतलब? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। हो जाता है कई बार, एंड दिस इज लाइक हम स्ट्रेस्ड या एंग्शियस हो रहे हैं तो आवाज नहीं निकल रही है ना, तो उस मोमेंट में जाने से पहले स्टेज पे यू कैन डू दिस डेफिनेटली वर्क्स। ये काम करने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है। सेकेंड चीज आप जो कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे या फिर जब स्पीच देते हुए, आप अपनी सांसें तो रेगुलेट कर ही सकते हो, विच मीन्स दैट आप तीन गहरी सांसें लेके जाना भी स्टेज पे, दैट ऑल्सो वर्क्स। सारे ड्यूरेशन में रादर देन फोकसिंग ऑन द क्राउड या फिर सामने कौन बैठा है, अगर आप अपना ध्यान आपके ऊपर और आपकी सांसों के ऊपर ला पाते हो तो आप बेसिकली डिस्कनेक्ट कर पाते हो कि सामने जज करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट से, एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, राइट। इसके अलावा कुछ भी करते टाइम, जस्ट दिस shrugging shoulders before you go on the stage can also be a good way of releasing the stress जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को अभी, राइट। वो कई बार बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन बिल्डअप हो जाती है, आप इससे सिर्फ वो टेंशन ही अगर जाने दें तो भी वो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करता है। एंड ट्राई a few of these things, I hope they are helpful, बट जाने से पहले और इन जनरल मैं बोलूंगी दैट अच्छे से ब्रेथ वर्क करके जाना कि बॉडी में अगर स्ट्रेस भी बिल्डअप हो रहा है इतने सारे लोगों को देखने से या इंटरव्यूअर्स को देखने से, तो भी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस नहीं है और वो मैनेज कर पा रही है उस स्ट्रेस को। कई बार होता है मैनी वे इतने टेंशन में होते हैं, कोई काम कर नहीं रहे होते खुद को रेगुलेट करने में, और उसके बाद फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है जब छोटी सी चीजों से स्ट्रेस होता है, लाइक वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, एंड दैट कैन बी ट्रबलसम। डिड दिस हेल्प? आई नो बस राशि का ही नेम है, बट वाज इट हेल्पफुल? राशि के अकाउंट से आई वाज टॉकिंग टू राशि's ब्रदर, ये काम आया, हेल्प किया? यस मैम। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। Hello, Bhavya. Yes, Dipanshu, tell me. Yes, ma'am. I just want to ask a simple question that as you iterated, my sister has the same symptoms. Like whenever she cries, sometimes her breath, like it literally stops. So what all precautions we have to take? Like the very first thing, because जब मतलब उसकी breath loss होती है, so seriously she turns down to be like pale, totally cold. So what is the first thing we should do in that particular situation to first bring the breath back? ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? That's it. ठीक है, सबसे पहले अगर किसी के सामने, एंड दिस इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, आपके सामने अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है या फिर पैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर सांस नहीं आ रही है रोने की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, वन थिंग, उनका हाथ ऐसे रखवाओ और उनके सामने हाथ ऐसे रख के गहरी सांसें लो। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, जो हम इन जनरल कर देते हैं कि हम उनको पकड़ लेते हैं, द एक्ट ऑफ हगिंग इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग टू द नर्वस सिस्टम, तो उनको पकड़ के हग कर लेना एंड दिल से लगा लेना वाला जो स्पेस होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। सबके साथ शायद पॉसिबल नहीं होगा, टीचर्स के लिए स्पेशली, मे बी ऑल स्टूडेंट्स माइट नॉट फील कंफर्टेबल, तो और भी तरीके होते हैं आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे ज्यादा उस टाइम पे हेल्पफुल करते हैं कि अगर आप घबरा जाओगे घबराए हुए इंसान के सामने तो वो और घबरा जाएगा। आपकी वॉइस का इंटोनेशन, आपका खुद का सेफ्टी एक्सपीरियंस कर पाना, विच बेसिकली मीन्स कि अगर उनको सांस नहीं भी आ रही है और आप बोलते हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सांस लेते हैं, बेटा जितनी सांस आ रही है उतनी सांस लो, धीरे धीरे लेंगे, गहरी सांसें लेंगे, मेरे साथ साथ सांस लो, देखो अभी सांस आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, एंड देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग विद दैट, बेसिकली लाइक धीरे से सांस लेते हैं, सांस लो, मेरे साथ सांस लो, एंड देन यू स्टार्ट ब्रीदिंग विद दैट। हाँ हाँ, जस्ट ये ह साउंड जो है ना मोमेंट्स ऑफ पैनिक में भी हेल्प होता है, जस्ट कीप ब्रीदिंग विद देम। आप रेगुलेट करो ब्रीदिंग, आप उनको बोलो मैं आपके साथ सांस नहीं, उनको सांस आनी शुरू हो जाती है, दे कैन स्टार्ट ब्रीदिंग एज वेल।
द सेकेंड थिंग इज कि जब उनको सांस नहीं आ रही है तो उनको बोलो कि बॉडी को सपोर्ट दे। आप उनके बिगर लिम्स विच इज बेसिकली आर्म्स एंड लेग्स को अगर आप प्रेशर दे सकते हो, थोड़ा सा ऐसे साथ में लेके आके उनको प्रेशर दो उन वाले स्पेसेस पे, दे विल एनीवे स्टार्ट ब्रीथिंग बेटर। अनदर थिंग, ये वाली चीज आपने एरोप्लेन्स में बहुत सुनी होगी, फॉर अ मोमेंट ऑफ पैनिक, कि वो बैग पकड़ा देते हैं, बोलते हैं बैग के अंदर सांस लो, है ना। अगर बैग नहीं है आसपास, वैसे थैली भी पकड़ा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है आसपास, तो उनको ये basically form the bag of a hand and ask them to breathe in and out, in and out, in and out into that bag. Does that help, Dipanshu? Yes, ma'am, that is so much helpful. I just want to ask that is this panic attack really fatal? Like जब एकदम से सांस नहीं आती तो मतलब she can't even wake up on her own. So we eventually have to carry her. Like it happened literally 2-3 times in a couple of months. So is it Again, like seriously dangerous? मतलब अगर एकदम से breath lose हो जाए तो breath lose hona for the longer time is cutting oxygen to your brain, right? yes. So again, dangerous हो सकता है, but I would not, मतलब अगर sister के साथ हो रहा है तो I would recommend कि doctor को check करवाओ, including a mental health professional, क्योंकि because I have not seen the symptoms, because I don't know the medical history, it would be wrong on me to diagnose it as a panic attack as well, कि panic attack ही हो रहा है, क्या पता कोई different reasons भी हो उसके, right? तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करवाकर, but these are some things that can be helpful. Given if at all it's a panic attack, all of these exercises that we have worked with today will work with your system. Sure. Thank you so much, पर Bhavya. डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए. Okay. Okay, any other questions? I'm only That here till 45 minutes. Yes, Suraj. Yes, ma'am. So basically, I do not have a question, but एक चीज बतानी है which helps me a lot when I'm frightened, when I'm panicked, and when like I'm anxious as hell. Though I'm trying to work on that, regulate that stuff, but immediately मुझे help करती है. Probably ये हो because I really don't know much about this stuff, but मेरा स्ट्रेस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है कि मेरा दिल बहुत बैठता है, मेरी चेस्ट पे बहुत प्रेशर आने लगता है, और अगेन ब्रीदिंग नहीं आती है, सांस ही नहीं निकलती है, कुछ बोला नहीं जाता है. दिस हैपेंस इन फैक्ट वेरी फ्रिक्वेंटली. तो उस सिचुएशन में आई डू वन थिंग विद मी विच एक्चुअली वर्क्स, दैट इज चेस्ट को धीरे 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 रब करना. एंड इनफैक्ट अगर कोई आप बैक को भी कर सके या कोई आपको प्यार से कर सके, बैक एंड चेस्ट, इट रियली हेल्प्स. सो Yeah. या दैट इज. Thank you for sharing. Thank you. Chest and back definitely helps. However, science has shown कि आपके bigger limbs जो होते हैं, limbs को अगर आप regulate कर सकते हो उस time पे, because again fight and flight active है. लड़ोगे बाजुओं से, भागोगे पैरों से. अगर आप इन दोनों को रेगुलेट कर सकते हो, और इसके अलावा सूरज ट्राई करना, rather than this, यहाँ पे अगर खुद को देना शुरू करो, you will see that this works better. Right? Just give it a try. Okay. Any other questions? Yes, Satvik. Go Regarding, ahead. yeah, I was saying this. Like Rashi's brother told me about getting panicky in case of speech or interview, something which helped me recently. So I had to give a speech in front of a great audience. So I was naturally anxious, but what struck me at that time that I thought I should pretend as if I'm giving a speech to my mother or my sister. That worked like a charm. I don't know how it came, but it did work. So I knew that however foolish or mistake I do, they won't judge me. They won't. They won't complain. They won't critique me. So I think this can work if you can apply it. If you in addition to all the wonderful techniques that Bhavya ma'am gave, we can think as if we are giving it to someone close. Yeah. Which kind Thank of you, Satvik. alleviates that fear.
Thank you for sharing that technique and thank you अपने सारे techniques and tools share करने के लिए that are working. Really appreciating the community space of this dynamic also. ठीक है. Bulbul asks why after doing these breathing techniques I feel tired and sleepy. A little tired maybe. Also हम लोग जब एक रेगुलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, दो बहुत कॉमन चीजें हैं रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की, विच इज बेसिकली रेस्ट और डाइजेस्ट. आप अगर स्लीपी फील कर रहे हो सो योर बॉडी मे बी नीडिंग अ रेस्ट फुल टाइम. गिव योर बॉडी द रेस्ट दैट इट नीड्स. इवन इफ दैट्स द केस, गिव योर बॉडी अ लिटिल रेस्ट, बिकॉज कई बार स्ट्रेस रिलीज हो जाना, स्ट्रेस आपकी बॉडी को अलर्ट और एक्टिव रखता है. तो जैसे ही स्ट्रेस रिलीज होता है आपकी बॉडी रेस्ट एंड काम में जा पाती है. सो दैट्स व्हाई यू मे बी फीलिंग अ लिटिल बिट स्लीपी एंड टायर्ड. Okay, any other questions? If not, can I please invite you, because this is the last of the 5 series that we did. अगर आपने पुराने workshops attend करे, and you can give me like a brief feedback of how was your experience in the 5 workshops on the chat, in the chat. If you can just write it there. कैसा लगा, क्या काम किया, नहीं काम किया, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा. जो आज नए आए हैं, if they can write as well कि आज की techniques कैसे लगी, that would be very very helpful. I love taking feedback, helps me grow, helps me get better. So please feel free to leave that in the chat. Satvik, you have a question? Yeah. Go ahead. One thing you said butterfly breathing and butterfly tapping. So do we tap on the chest or the shoulder? We tap here or here? Ideally कहीं पे भी any kind of bilateral stimulation is good. Shoulder तक आ पा रहा है तो again limb stimulate हो रहा है. But कई बार जो लोग यहाँ से सांस ले रहे होते हैं, अगर आप इस तरीके से यहाँ भी tapping करो, that also works. Collarbone पे. Yeah, because we hold stress here. सांस अंदर ही नहीं जा रही हो. Finally, this is not for a panic attack case. उस time पे immediate करना पड़ता है. If we generally want to practice breathing, is it fine? Some people say we shouldn't do it in a full stomach. I haven't heard why they would say that. मैंने जब भी सुना है, जितनी बार भी सुना है, एक पुरानी वर्कशॉप में डॉक्टर शबाना ने भी शेयर किया था कि क्यों जरूरी होता है ब्रीथ करना थ्रू द स्टमक. आइडिया इज कि जितना ज्यादा हम सांस ले पाते हैं स्टमक से, हम उतनी डीपर ब्रेथ बॉडी को एक्सेस करने के लिए दे पा रहे होते हैं. एंड इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू ब्रीथ थ्रू योर स्टमक एवरी डे. I was asking, नहीं स्टमक का मैं समझ गया. मैं कह रहा हूँ कि some people say we don't, if we need to practice breathing, practice it before eating something. Don't before eating. Yeah, practice it. No, do not try to practice it on a full stomach. पेट भर के breathing नहीं हो सकता ढंग से होती. I am again यहाँ पे I think I'll fall short of spaces because not a yoga practitioner, might have sense to it. Definitely कोई science logic reason होगा इस चीज को बोलने का. Possibly empty stomach इसलिए बोला जा रहा होता है क्योंकि body regulated, मतलब rest and digest कर रहे हो ना, तो रेस्ट क्रिएट करने में अगर ऑलरेडी डाइजेशन में एंगेज्ड है बॉडी या प्रोसेस चल रहा है तो दैट माइट बी द रीजन और कुड बी समथिंग एल्स. बट अगेन ये जो सारी टेक्निक्स अभी आज हमने करी हैं इसमें से कोई भी ऐसे नहीं है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट बिफोर दिस सेशन. नथिंग दैट इट कॉजेस डिस्कम्फर्ट टू योर बॉडी अगर आप फुल स्टमक पे भी कर रहे हो. सो ब्रीदिंग तो हम सारा टाइम, यस, डॉक्टर शबाना इज आल्सो सेइंग दैट in a short time after eating it works for me. So again, eating or not eating may not have anything to do with जो हमने आज techniques करी हैं specifically. Does not have any other thing. Worst case scenario, it will relax your nervous system or digestion better करेगा. Like she's saying that it relaxes the bloating. It works. I would also like to present my feedback. It was wonderful having these sessions with you, Bhavya, ma'am, and I made it a point to spread these techniques as far as I could. I told them to my family, my friends, and I truly believe you are an amazing therapist and counselor. The way you tell, the way you underline things, the sequence of things, and I think
even seeing you sitting calmly also induces a sense of calm to the people. Thank So thank you so much for uh, uh, to you for having the time, taking the time, and to Suraj and the GCC team for inviting us. thank you, Satvik. Thank you Thank for being here for a lot of thank sessions.